So hey guys, welcome back to our another video. So in previous lecture, we have discussed about nitrogenous fertilizer and their types. So in this lecture, we are going to discuss about phosphatic fertilizer and their types. Okay. So without wasting your time, so let's start it. Okay. So there are two important material needed for manufacturing phosphatic fertilizer. Okay, so there are phosphatic fertilizer. Okay, so there are two important material needed for manufacturing phosphatic fertilizer. Okay, तो जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए हमको दो मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट नंबर है फॉस्फेटिक रॉक। फॉस्फेटिक रॉक, ओके। एंड सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। इसको अपन बोलते हैं H2SO4, ठीक। तो ये जो मटेरियल है दो, ये हमको जरूरत पड़ती है इसलिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ओके। So any rock or you can say phosphate containing fertilizer which are large amount of phosphorus and mineral used for production of phosphatic fertilizer. So these are direct applied to field or soil. So production of industrial phosphorus compounds. So where out of 150 minerals which contain about more than 1% P2O5, only two groups commonly used as aluminum phosphate, which is known as AlPO4, and second one is apatite. Uh, so almost all produce from it. So almost all जो phosphatic fertilizer हैं वो इससे बनते हैं. So best source of making rock phosphate as fluorapatite, which is known as C18PO4.
Cahol 6 into F2. So लिख लिखते हैं. Okay. So any rock containing large amount of phosphorus and minerals are used as. So production of P fertilizer. Okay, which is directly applied to field or soil, which is direct applying to field or soil. Okay, so production of industrial phosphorus compounds for production of industrial phosphorus compound. So here is out of 150 minerals, how much out of 150 minerals are there which contain about more than 1% P2O5. Okay, so there are two commonly groups are used. So there are mainly two groups are especially used. So first one is and second one is. So first one is aluminum phosphate, aluminum phosphate, and second one is apatite. Uh, so apatite is basically a source of making rock phosphate, which is used as a floor apatite. Okay, so floor apatite, which chemical formula is uh, Ca10 PO4 whole 6 into F2. This is the chemical formula of fluorapatite. Okay, uh, and aluminum phosphate is Al2.
PO4. So this is the aluminum phosphate. Okay. So uh, yeah, two important material used for manufacturing phosphatic rock or sulfuric acid. These are the two important material which are used to produce phosphatic fertilizer. Hmm. So phosphate and rock phosphate. These are two types. First one is low grade shale and second one is higher grade concentration. Okay. So लो ग्रेड शेल को क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे सिलिका के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then it will convert into sulfur phosphoric acid, which have 80% P2O5, and then it will react with ammonia and H3, then it will produce ammonium phosphate. Okay, and then here is low grade shares. Okay, so it will if it will react with phosphorus, then it will be metaphosphate, which have which has which have 0.00 to 64. It means here is 64% of phosphorus are found. Okay, so second one is high grade concentration. So here if we react with H2SO4, then it will normal superphosphate, and then it will be react with H2SO4 and phosphatic fertilizer, then it will be produced TSP, and then again this is further uh, dynamic ratio it will be running. Okay, so here if we will be if we use uh, phosphatic fertilizer with H2SO4, then it will be converted normal superphosphate, which has in which 20% phosphorus are available. Then if we will react with H2SO4 and H3PO4, then it will be converted into triple superphosphate, in which 46% phosphorus are available. Then if we will be react with H3PO4 and ammonia and H3PO4, then it will be produces ammoniated superphosphate, in which 8% nitrogen and 16% phosphorus are available. Then if we will be react with H2SO4 and H3, and then it will produce ammonium phosphate. So first one is monoammonium phosphate and diammonium phosphate. So in monoammonium phosphate there is 11% nitrogen and 55% is phosphorus, and in diammonium phosphate there is 18% 18% is ammonia, sorry, nitrogen, and 46% is your phosphorus, and 0% potash. Okay, so it will be react with H2SO4, then it will be converted into superphosphoric acid, in which 72% phosphorus are available, and then it will react with ammonia, then it will be converted into ammonium polyphosphate, which in which 10% nitrogen and 34% phosphorus are there. So if we react with NH3 and HNO3, then it will be converted into nitric phosphate, in which 2020 nitrogen and phosphorus are there. So in second slide, so, so any rock containing large amount of phosphorus and minerals which are used as production of pea fertilizer, so which are directly applied to field or soil. So production of industrial phosphorus compounds out of 150 minerals
which contain about 1% P2O5. Only two groups commonly used as first one is ammonium phosphate and second one is apatite. So apatite is commonly produced from fluorapatite, which chemical formula is Ca10 PO4 ka whole 6 into F2. Okay, so phosphoric acid is important intermediate product as lesser than end product in phosphatic fertilizer industry. So contribute about 90% of phosphorus produced in form of fertilizer, and for production of it there are two important processes are involved, such as furnace process. So in this process fluorapatite are used, which is react with carbon and silica oxide. Then it will be further converted into 15P4 plus 15CO and calcium silicate and CaF2. Then P4 plus 5O2 will be converted into P2O5, and then this P2O5 is converted into 3H2O, and then it will be produced to NH3PO4. So it is very high costly involved, and low use of phosphorus P fertilizer uh, production. So it is commonly very less used. And then second one is wet process. So in wet process fluorapatite is react with H2SO4 means sulfuric acid and H2O. Then it will be converted into calcium sulfate and H2O and H3PO4 and HF. And then here N is equal to 0 and N is equal to 0.5% and N is equal to 2. Here calcium sulfate, and this is calcium sulfate and H2O and H2O. So any phosphate can be made by phosphoric acid. However, commonly P fertilizer produced through H3PO4 are TSP, AMP, nitrogenous nitrogenous phosphatic complexes. So some important phosphatic fertilizer. First one is SSP, which is also known as normal superphosphate or ordinary superphosphate. So SSP is produced by using Ca2 calcium monophosphate plus calcium sulfate, and it will be manufactured with Ca10PO4 is reacted with H2SO4 and 3H2, then it will be produced in Ca H2PO4 plus H2O and CaSO4 plus HF. So it is high water soluble and neutral in reaction. It applied in calcareous soil. Dicalcium phosphate DCP is formed. So pH of saturated soil in 1 and calcium is 1.3 mole per liter. So in which 16 to 20% P2O5 and 11 to 12% sulfur and 18 to 21% calcium are available. So second one is a diammonium phosphate. So in diammonium phosphate, uh, in this process, rock phosphate and sulfuric acid is reacted, and then it will produces in SSP or TSP. So there is 20 to 25 to 35% P2O5, 7 to 9% sulfur, and 16 to 10% calcium. Hmm. So next one is a TSP, which is triple superphosphate.
So it is highly concentrated phosphoric fertilizer, water soluble, acidic nature, and unsuitable for blending with urea, and manufactured when a fluorapatite plus phosphoric acid and H2SO4 को react करा जाता है, then it will produce. And here is 43 to 52% P2O5 and 0.1% sulfur and 48% calcium are there. And next one is ammonium phosphate, which is known as MAP, and second one is DAP. So NH4S2PO4 is your MAP, in which 11% nitrogen and 52% are uh, phosphorus P2O5, and this is 11% is nitrogen content. And second one is DAP, which formula is NH4 whole twice HPA4, in which 18% nitrogen and 46% is your P2O5. So it is acidic in nature. Both are MAP. In MAP, initial pH is 3.5, whereas alkaline 8.8 and 8.8 pH DAP. So ammonium ion concentration is 2.9 mole per liter, DAP 7.6 mole per liter. So DAP, this is second important fertilizer. Urea in case of and produced after urea acid equivalent is 86 and also creates acidity. So DAP is also create acidity in field condition. And next one is calcium ammonium phosphate. So there are many types of calcium phosphatic fertilizer. First one is MCP, monocalcium phosphate, dicalcium phosphate, tricalcium phosphate. So this is the formula of MCP, monocalcium phosphate, and second one is DCP and tricalcium phosphate. So acidic soluble, not water soluble phosphorus that in this application in acidic solution mostly. So next one is rock phosphate. So it can also be directly applied to field, acid soluble, alkaline in nature. One one ratio one blending with rock phosphate and water soluble fertilizer SSP, DSP, TSP, particularly which crop required acidic situation, uh, rice, potato, maize, etc. So P2O5 is 20 to 29%. Next one is a basic slag, which is also known as dicalcium phosphate. So suitable for acidic soil and byproduct of steel industry. So basic slag is the byproduct of steel industry. So for acidic soil, although for long duration crops, P2O5 is 6 to 20%, and calcium is there 33 to 34%. So next one is bone meal. This is two type. First one is raw raw untreated, and second one is steam form or treated. So untreated, in treated untreated, so there is more nitrogen and less phosphorus, which is 2 to 4% and 20 to 25%. Here is in steam form, so there is less nitrogen and more phosphorus. Here is 1 to 2% nitrogen and 25 to 30% your phosphorus is there. So in organic in nature, it is on organic in nature. It can be applied well before sowing and at time of sowing and planting. Besides, and P2O5 also contain 23% calcium. So this was all about your phosphatic fertilizer. So इसको अपन थोड़ा written फॉर्म में देखते हैं, तो नोट्स था उसको मैंने रेडी किया है. So phosphatic fertilizer. Okay. So so
जो अपना फास्फोरस होता है जिसको अपन बोलते हैं P2O5। ठीक, ये क्या है? फास्फोरस है। ठीक, जो प्लांट इसको अपटेक करता है इसी फॉर्म में करता है, P2O5 के फॉर्म में नहीं करता है, न कि पी के फॉर्म में करता है। ठीक है, सबसे बेसिक चीज तो ये है, पहले ये जानना चाहिए आपको कि जो प्लांट है वो फास्फोरस को किस फॉर्म में लेता है। तो किस फॉर्म में लेता है वो प्लांट इसको अपटेक करता है, प्लांट अपटेक phosphorus into P2O5 form, okay, which is pentoxide form, okay, pentaoxide form, okay. So there are more types, which is S2PO4. Second one is HPO4, and next one is PO4. Okay, so S2PO4 minus, second one is HPO4 minus minus, and third one is PO4 minus minus minus. So प्लांट जो अपटेक करता है हमेशा जो लेस नेगेटिव चार्ज वाला होता है, प्लांट उसी को प्रेफर करता है अपटेकिंग के लिए। ठीक है, तो अगर ये आपको ऑप्शन में दिया जाए, ठीक है, H2PO4, HPO4 एंड PO4, इनमें से आप ये बताओ कि कौन सा प्लांट अपटेक करेगा इस फॉर्म को। तो हमेशा जो कम चार्ज वाला होता है प्लांट उसको क्या करता है, अपटेक करता है। ठीक, हालांकि यहाँ पे जो तीनों फॉर्म है ये तीनों फॉर्म प्लांट क्या करता है, अपटेक करता है। इन तीनों फॉर्म को प्लांट अपटेक करता है। ठीक है, जो मान लो ये आपका प्लांट हो गया, एक सेकेंड, मान लो ये आपका प्लांट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपकी सॉइल, मान लो ये उसकी रूट्स हो गए। ठीक, मान लो आपका पौधा हो गया। तो आपका जो पौधा है जो P2O5 को लेगा वो तीनों फॉर्म में लेगा। कौन कौन से में? ये लेगा आपका H2O5, H2PO4 के फॉर्म में लेगा, प्लस HPO4 के फॉर्म में लेगा, एंड PO4 के फॉर्म में लेगा। ठीक, ये तीनों फॉर्म को लेगा वो। लेकिन अगर पूछा जाए मोस्टली प्रेफर कौन करेगा, तो मोस्टली जो प्रेफर करेगा वो PO4 माइनस को करेगा प्रेफर। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी हो गई इसके बारे में। अब इसमें जो फास्फोरस जो बनता है इसका जो मेन मिनरल है वो क्या है, रॉक फॉस्फेट है। ठीक, रॉक फॉस्फेट, जो कि अपन ने भी आगे पढ़ा है इसके बारे में। जो फास्फोरस बनता है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो रॉक फॉस्फेट ही है। ठीक, तो इसका जो प्राइमरी सोर्स क्या है वो रॉक फॉस्फेट है। तो इसको अगर अपन रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ये नहीं, अगर अपन इसको रिएक्ट कराएं
H2SO4 के साथ। ठीक, तो अपन को क्या मिलेगा? सुपर फास्फेट। इससे जो रिएक्ट होके जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? सुपर फास्फेट होगा। ठीक, इससे अपन को क्या मिलेगा? सुपर फास्फेट मिलेगा। ये अपना क्या है? मेन मिनरल है। इसी से क्या है? फास्फोरस बनता है। और जो कि एपेटाइट होता है। ठीक, अभी तो हो गया इसके बारे में बेसिक जानकारी फास्फोरस के बारे में। ठीक, अब अपन बात करते हैं इसके टाइप्स के लिए। ठीक, अगर इसके आप टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, अपन तो भी उस नोट्स में देखा था, इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में देखते हैं, लिख के देखते हैं। सो फर्स्ट वन है वाटर सोल्यूबल। ठीक, पहला कौन सा है? वाटर सोल्यूबल, मतलब फास्फोरस के ऐसे फॉर्म जो कि वाटर में क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। तो इसमें अपना आ जाएगा MCP, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। सेकंड वन इज अमोनियम फॉस्फेट, ठीक, ये वाटर सोल्यूबल होंगे। SSP, DSP, TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, MAP, मोनोमोनियम फॉस्फेट, एंड DAP, ओके, एंड ammonium phosphatic sulfate. So these are the water soluble phosphorus। ठीक, जिससे क्या क्या होगा? इसके यूज से क्या होगा? क्विक ग्रोथ होगा एंड शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। एंड ये न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल में इसको कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक है, इन फर्टिलाइजर्स को। अब इसका सेकेंड फॉर्म को देखते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया वाटर सोल्यूबल। सेकेंड देखते हैं अपन, अगर हम 20% सिट्रिक एसिड, ठीक, अगर इस सॉइल में अगर अपन फॉस्फोरस के किस फॉर्म को यूज कर सकते हैं, कौन सी फॉस्फोरस को अपन यूज करते हैं, और वहां पे 20% सिट्रिक एसिड को, अ, इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, इसके हेल्प से जो प्रोड्यूस होता है फॉस्फोरस, वो कौन कौन से हैं? तो इसमें है अपना डाई कैल्शियम फॉस्फेट, CaHPO4, एंड बेसिक स्लैग। ये तुम्हारे सिट्रिक एसिड फर्टिलाइजर होंगे, इसमें कि जो सिट्रिक एसिड का जो क्वांटिटी होती है वो 20% होता है। ठीक, इसको अमोनियम एसीटेट के नाम से भी जाना जाता है। सो इनको अपन वहाँ यूज करते हैं इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल में अपन इसको यूज करते हैं। ठीक है, हाँ यूज करते हैं एसिडिक सॉइल में फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन
क्रॉप के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक। थर्ड वन इज नाइदर इन सिट्रिक नॉर इन वाटर। तीसरा फॉर्म कौन सा है? नाइदर इन सिट्रिक नॉर इन वाटर। अब ये क्या है? तो इसका जो एग्जांपल है वो है TCP एंड रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट। एंड इसके अंदर आ जाएगा बोन मिल। ये कैसे होते हैं? वेरी एसिडिक होते हैं एंड प्लांटेशन क्रॉप में इनको कॉमनली यूज किया जाता है। ठीक। तो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। और प्रॉपर्टीज और देख लिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, इसको और देख लेते हैं। अच्छा, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर अपन एक और लेक्चर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं।